Hello students, in this video we will find the equations of asymptotes of hyperbola. Now what is asymptote? Asymptote is tangent to curve at infinity. वो लाइन जो कर्व को इंफिनिटी पे टच करता है उसको हम asymptote कहते हैं. Like here we have graph of function y is equal to e power x. We have graph of exponential function. We can see that distance between graph and x-axis approaches to 0 when x approaches to minus infinity. जब x माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है तो ग्राफ एंड x एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है, वो जीरो को अप्रोच कर रहा है. वी कैन से दैट x एक्सिस टचेस द कर्व एट इंफिनिटी. हियर इंफिनिटी इज माइनस इंफिनिटी. x एक्सिस कर्व को इंफिनिटी पे टच कर रहा है, सो हियर x एक्सिस इज एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व. ठीक है ना. Then we consider logarithmic function. We have here graph of y is equal to log x to the base e. We can see that when x approaches to 0, distance between curve and y axis approaches to 0. ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है. ठीक है. जितना ये नीचे जाएगा उतना ही उसका y axis से डिस्टेंस कम होता जाएगा. ये जो डिस्टेंस है वो जीरो को अप्रोच करेगा व्हेन x approaches to 0. x is approaching to 0 from its right hand side. So here y axis is tangent to curve at infinity. Again here infinity is minus infinity. Okay. So here y axis is asymptote of the curve. y is equal to log x function के लिए asymptote होता है y axis. Okay. Then we have tangent function. We have here graph of y is equal to tan x. Okay. Here all the vertical lines x is equal to 2n plus 1 multiplied by pi by 2 where n belongs to z are asymptotes to the curve. ये जो सारे लाइन्स है वर्टिकल लाइन्स वो tan x के कर्व को इंफिनिटी पे टच कर रहे हैं, तो ये जो सारे लाइन्स हैं वो tan x फंक्शन के एसिम्प्टोट्स हो जाएंगे. यहाँ पे इनफाइनाइट एसिम्प्टोट्स है. Now we consider curve hyperbola. We consider this equation x square over a square minus y square over b square is equal to k. Okay. For different values of k we will have different hyperbolas, but all the hyperbolas will have x's as coordinate axis. If k is positive then we have this set of hyperbolas. Okay, in which transverse axis will be x axis and conjugate axis will be y axis, and if k is negative then we have this set of hyperbolas in which transverse axis will be y axis and conjugate axis will be x axis. Okay. Now let's find the equations of asymptotes of this hyperbola. For that we consider points on hyperbola having abscissa x1. हम हाइपरबोला के ऊपर पॉइंट्स कंसीडर करते हैं जिसका एब्सिसा x1 होगा. x की एक वैल्यू के लिए हाइपरबोला की इक्वेशन से हमें y की दो वैल्यूज मिलेंगी. ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे दो पॉइंट्स मिलेंगे. फॉर x is equal to x1, from this equation we will get y is equal to plus minus b multiplied by root x1 square over a square minus k. Okay, so we have 2 points, abscissa is x1 and corresponding ordinates have these two values. दो पॉइंट्स होंगे. ठीक है ना. Let's find equations of tangents at these 2 points. We use equation t is equal to 0. हाइपरबोला के ऊपर कोई पॉइंट गिवन है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन इज t is equal to 0. Okay, and we get expression t by replacements. We replace here x square by x x1. Okay, and y square by y multiplied by this. So we have here plus minus 1 upon b multiplied by root x1 square over a square minus k multiplied by y is equal to k. Okay, these are equations of tangents to hyperbola at points on it whose abscissa is x1. ठीक है. Now we want to find equations of asymptotes. Asymptotes are tangents at infinity. Okay, so for asymptotes here x1 approaches to infinity, infinity or minus infinity. ठीक है ना. So what we do to use the
दिस वैल्यू वी डिवाइड दिस इक्वेशन बोथ साइड्स बाय x1. हम इस इक्वेशन को दोनों साइड्स पे x1 से डिवाइड करते हैं. सो वी गेट इक्वेशन x ओवर a स्क्वायर प्लस माइनस 1 over b multiply by, we take x1 inside square root. Okay, we are considering infinity to be positive infinity. Okay, so we can take it inside square root. We have here 1 upon a square minus k upon x1 square multiply by y equal to k upon x1. Okay, now why we divided by x1? Because x1 approaches to infinity and 1 upon x1 approaches to 0. जब x1 infinity को approach करेगा तो 1 upon x1 का value 0 को approach करेगा. ठीक है ना? So here these two values will be 0. So we get equations x over a square plus minus y over ab is equal to 0. Okay, so we get x over a plus minus y over b is equal to 0. We have equations of straight lines. These lines are tangents to hyperbola at infinity for x1 approaches to infinity. So we have here two lines, two asymptotes. Both these asymptotes pass through origin. Origin is center of hyperbola. Okay, so we draw this asymptote lines. आप देखिए asymptotes किस तरह से होते हैं. From this we get to know that what is the nature of curvature of hyperbola. Hyperbola का curvature किस तरह का होता है ये हमें पता चल रहा है. In fact, to draw the graph of hyperbola, what we do? We first draw the asymptote lines which passes through its center. Okay, then we draw the branches of hyperbola like this. ठीक है, branches approaches to asymptotes. Okay, when we move to infinity. जब हम infinity की तरफ जाएंगे तो हाइपरबोला के ब्रांचेस एसिम्प्टोट्स को अप्रोच करेंगे. ठीक है ना? Now here we can see that for this family of hyperbolas having this common equation, equations of asymptotes are same. For different values of k we have different hyperbolas. Okay, but for all these hyperbolas equations of asymptotes are same. Equation of this asymptote is x over a minus y over b is equal to 0. And equation of this asymptote is x over a plus y over b is equal to 0. If the equation of hyperbola is given, then it will have unique pair of asymptotes. अगर hyperbola का equation given है तो उसका एक unique pair of asymptotes होगा. ठीक है? But if equations of asymptotes are given, then we can draw infinite number of hyperbolas. अगर एसिम्प्टोट्स के इक्वेशंस गिवन है तो उसके लिए हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ हाइपरबोलास ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से. ठीक है ना? Now let's find the equation of pair of asymptotes. If we multiply these two equations, we get equation of pair of asymptotes as x square over a square minus y square over b square is equal to 0. Okay. Now compare these two equations. इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें. ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? Equation of hyperbola and equation of its pair of asymptotes differ by constant. इन दोनों इक्वेशन में सिर्फ कांस्टेंट का फर्क है. यहाँ पे k है, यहाँ पे k नहीं है. ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड कंसेप्चुअल फाइंडिंग दैट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला and that of its pair of asymptotes differ by constant. Using this fact, we can find the equation of asymptotes of given equation of hyperbola. अगर हाइपरबोला का इक्वेशन गिवन है तो हम उसके एसिम्प्टोट्स के पेयर का इक्वेशन निकाल सकते हैं